today we will discuss why testosterone is equally important in males and in females. Of course, in males it is very important for our growth and for the sexual functioning. लेकिन females में अगर हमारा testosterone बहुत कम है तो हमारा cortisol बहुत बढ़ जाएगा because these hormones are inversely proportional. और cortisol बहुत बढ़ने की वजह से हमें भूख ज़्यादा लग सकती है, sleep disturb हो सकती है, stress levels increase and depression हो सकता है. Our metabolism will slow down and it will cause other problems. तो normal and healthy testosterone levels जो which is good for a female is very important for muscle building, for bone building, for a good stamina, a proper healthy metabolism. So now how to maintain a fair good amount of testosterone in your blood, and उसके लिए हमने जो चीज़ें हम खा सकते हैं to increase and to release the healthy amount of testosterone is high amount of protein in our diet, fats, vitamin D3 either from sunlight, supplements or food, tuna, egg yolks, lots of vitamins and minerals, that means fruits and vegetables, ginger extract or adrak, methi extract or methi dana. So these food items will help to increase the testosterone levels in your blood, and obviously it is a natural remedy, so the levels will be fairly normal, they will not exceed और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा. तो hence हम बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करते that you take artificial hormones because they can disturb your natural hormone cycle. Next, in case there is some problem, please consult your doctor. We will help you to diagnose what problem is there and we will fix it with safe medications and safe nutrition care. Next come on to be weight training. Weight training help release testosterone and increase the muscle building and bone building in our body. गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, अगर आपका सोने का टाइम और जागने का टाइम फेयरली सेम है, 7 से 8 घंटे की आप नींद ले रहे हैं, डीप स्लीप ले रहे हैं, तो इट विल हेल्प रिलीज नॉर्मल हार्मोन. A healthy sex life will obviously help, and lots of laughter, happiness and a stress-free life will release normal healthy amount of hormones. So hence जैसे हमने बात करा था कि that they are inversely proportional to cortisol. So if there is some problem we have to balance and work upon both the hormones. कि cortisol अगर ज़्यादा है तो हमें उसको भी कम करना है. Alcohol and drugs हम नहीं लेना है. Alcohol, drugs and smoking they decrease testosterone and they can cause infertility and erectile dysfunctioning. So hence we have to avoid these things. नेक्स्ट इज़ BPA प्लास्टिक. अगर हम अपना फूड मटेरियल या कुछ भी चीज़ BPA प्लास्टिक जिसमें BPA है उसमें स्टोर कर रहे हैं तो दैट में डिक्रीज द टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड अगेन इट इज़ अ हाईली इट्स अ very common cause of male infertility nowadays because of low testosterone levels. So hence हमें अपने खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें किसी भी प्लास्टिक मटेरियल में स्टोर नहीं करना चाहिए. वी शुड यूज़ ऑलवेज स्टील और ग्लास यूटेंसिल्स टू स्टोर देम टू लीड अ हेल्दी लाइफ एंड टू रिलीज अ regular normal amount of hormones and to have a healthy and balanced metabolism.